Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to GIBC Every Prep. Hope you all are doing well with your preparation. Guys, in this particular session, we are going to talk around unit number 30th from INIFS Module D, which is all around the money market. Okay. So, with the help of number of MCQs and case studies, we are going to decode the entire unit. So we just started this particular subject. So we have done, like, we are starting with basically module D, and module wise concept videos are already there. There are 3-4 units for them. The upload part is remaining from my side. I'll upload those particular one. Actually, there was restrictions in the length of the video, and module D is bit like we can say it's a very lengthy one. Okay. So we will do that particular one, no worries. So now in our previous session, like module D is one of the most important module because we have total 45 units. Out of 45 units, 17 units are generally belongs to this particular one. Okay? So you can expect at least 35 to 40 marks question downside from this particular module itself, right? So financial market and overview, we generally done with this particular session with our in our previous session. Okay? So today we are going to talk around the questions or MCQs or the concept related to money market. Okay, so one by one we will complete all these unit as well. So the very first, the 30th unit, money market, which include these many subtopics like call money, notice money, and term money, interbank transaction. Then we have treasury bills, certificate of deposit, commercial paper, repo transaction, tri-repo, bill discounting scheme. Then we have long-term repo operation or TLTRO. So these are generally known as मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो अब इनमें से किसी दो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, मोस्टली फॉर 2 मार्क्स. अब वो कौन से होंगे, विल नॉट टेक एनी चांस. वी विल गो फॉर दी वी विल विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ एमसीक्यूज we are going to practice each and every subtopic of this particular one. Okay, what is money market, that we have already discussed in our previous session, or like everybody knows about that one. Basically, it is a market from where companies or government, they generally raise short term funds, or basically this market is generally known for short term borrowing and lendings. Okay, these are the major instruments of this particular market. So with the help of a set of question and case studies, we are going to discuss this particular one. So without any further delay, guys, we will start our today's discussion with very first question, which is linked with your call money, notice money, and term money. With this question, you'll get 100% clarity about these three instruments. Okay? So Rajesh, a treasury analyst at a growing fintech firm, is evaluating different avenues for managing the company's short-term cash flow efficiently. He comes across call, notice, and term money market, which facilitate borrowing and lending for varying durations. So, like for one night, overnight, then we have 2 to 14 days, and beyond 14 days up to 1 year. To make a well-informed financial decision, Rajesh seek to understand the functioning of these market and the key participation involved, the regulatory framework and all. Which of the following statement about call money, notice money, and term money is correct? So you have to find out the correct statement about these particular one. All right. So so we have given six statement. Again. So first one is आपका, it should be like this. Okay. So first statement आपका, call money transaction are typically for 1 day, overnight, 24 hours. Okay. True. Call money transaction are typically 2 for 14 days. It is notice money. Notice money transaction 2 to 14 days. True. So these two statements are true so far. Okay. Notice money transaction are typically for 1 day. No. Term money transactions involve borrowing or lending for a period exceeding 14 days or up to 1 year. The third statement, which is true. Term money transaction involve borrowing or lending for a period exceeding 14 days up to 6 months. No, it is up to 1 year. So the correct statement about this particular one will be 1, 3, and 4 आपका. ठीक है. So these are the true statements regarding call, notice, and term money. So option A only will be right answer for this particular one. Very simple question. The period of lending may be
for a period of 1 day, which is known as call money, or 2 to 14 days notice money, and term money, which generally range from like exceeding 14 days to up to 1 year, right? So participants in call notice and term money include bank, primary dealers, development financial institutions, insurance companies, and select mutual funds also. Okay? So of these, bank and primary dealers can operate both as borrowers as well as lenders in the market itself. All right. So we will now onwards, like with every question, I'll also come up with the theoretical aspect. ये तो उसका भी रिवीजन आपको कराऊंगा, ठीक है? बिकॉज आई एन आई एफ एस इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, जहाँ पे मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा आपके साथ, ठीक है? तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो यहीं से लीड होगा, ठीक है? So call notice and term money market is a market for lending very short. Sorry guys. So short-term liquid financial asset that are readily convertible into cash at low cost. The money market primarily facilitate lending and borrowing of funds between bank and entities like primary dealers. An institution which has surplus funds may lend them on an uncollateral basis to an institution. So this is the basic one. The call money is basically known for 1 day आपका, and notice money 2 to 14 days, and term money, if it comes to the term money, so exceeding 14 days up to 1 year. So these are the three instruments which are generally part of this particular one. Understood? Clear? Very simple question. Okay. Next one. Which of the following statement about money market instruments is incorrect? So you have to find out the incorrect statement out of the given four statement. Treasury bills are issued by Government of India to meet a short-term fiscal requirement. This is true. So usually treasury bills, they get issued by RBI on behalf of Government of India, but the promise is generally made by government, so it is true. Call money, notice money, term money are different form of short-term interbank lending. Interbank is bank to bank. Yeah. True. Commercial paper is a secured financial instruments issued by corporate for short-term lending. So this part is correct. Commercial paper are issued by the corporate houses, but they are unsecured instruments. ठीक है? So mostly in money market, all the instruments are unsecured. जैसे हमने यहाँ पे भी आपका डिस्कस किया था ना, uncollateralized. ठीक है? So there is no security against these particular instruments. Okay? So that's why a commercial paper is highly risky instrument from the money market if you compare with the other product of money market like treasury bills, certificate of deposit and all. So the probability of default is higher in case of companies compared to government or आपका banks. ठीक है? Certificate of deposit CDs are issued by scheduled commercial bank and all India financial institutions. बिल्कुल सही, ठीक है? So option C is incorrect. So that is your right answer for this particular one. ठीक है? So commercial paper is an unsecured debt instrument, meaning it does not require collateral. It is issued by large corporate houses and a bank to meet a short-term liquidity requirements. Okay? So in call money and notice money market, scheduled commercial bank are subject to specific prudential limit. Very important question, guys. ऐसे लिमिट्स आपका बहुत बार पूछे जाते हैं, ये आपका कॉल मनी नोटिस मनी के ऊपर बैंक्स वाइज लिमिट एंड ऑल, ठीक है? सो इन कॉल मनी and notice money market, scheduled commercial bank are subject to specific prudential limits regarding their outstanding borrowing transactions. Means how much money they can raise through the call money notice money. So that is linked with their capital. What is the maximum percentage of capital funds that scheduled commercial bank can borrow in the call and notice money market on any given day? Okay, so it is on any given day. So overall आपका, so it is how much? 125%. Usually it is 100% on daily basis, but at any given day it can be आपका 125%. So 125 or 150, yes, 125% is the right answer for this particular one. Very important question, guys. I'll show you the detailed explanation for this particular one. So in call money and notice money market, scheduled commercial bank are subject to specific prudential limits regarding their outstanding borrowings transactions. So according to the guidelines for call money, bank can borrow up to 100% of their
capital funds on daily average basis. ठीक है? So on daily average basis, it is how much? 100%. But the question was on any given day overall, they are allowed to exceed this sum by borrowing up to 125% of their capital funds. Okay? So that is the difference. Like the normal guidelines is this, but if they want to extend it on any specific day, so it can be 125%. Okay? So this is the chart. This is very, very important one for all of you. Okay? Please pay your attention. So prudential limits for outstanding borrowing transaction in call, notice and term money. Scheduled commercial bank including small finance bank, call and notice money, it is 100% of capital funds on daily average basis in a reporting fortnight, and 125% capital funds on any given day. This was our question. Term money आपका internal board approval limit within a prudential limit for interbank liabilities. ठीक है, for term money. Payment banks and regional rural banks, call and notice and term money 100% capital funds, 125% any given day. ठीक है, so the same rule. Cooperative banks आपका call notice term 2% 2% of aggregate deposit as at the end of previous financial year. Very important. ध्यान रखिएगा. For cooperative banks, so this is the one. ठीक है. Primary dealers आपका call and notice money. ठीक है. 225% of net owned funds. ठीक है. So आपका जैसे NBFCs and all है. ठीक है. As at the end of previous year's financial year on daily average basis of the reporting fortnight. In case of term money, 225% of net owned funds as end of the previous financial year, right? So these are the guidelines जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका इनके ऊपर क्वेश्चन डिजाइन होता है. ठीक है, सो आपको इनको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से. ठीक है, डू नॉट मिस दिस वन. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ये चीजें आपको याद रहेंगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the three type of treasury bills issued by government of India for financing short-term debt obligations? So RBI conduct OMO, open market operations, and through OMO, they generally sell government securities in the market. Yes, buying and selling of government securities through RBI is generally known as open market operation. So earlier there was four type of treasury bills. There was one treasury bill for 14 days, but now it is outdated. Okay, so we have three type: 91 days, 182 days, and 364 days. Okay, so 91 days, 182 days, and 364 days. Okay, how you will remember this? 91 का double 182, 182 का double 364 days. Okay, RBI generally issue these particular one on discounted basis. Basically, like we have zero coupon bonds now, so these are similar to zero coupon bond. ठीक है, जैसे let's say RBI come up with 91 days treasury bills. ठीक है, so how the RBI will issue कि आपका government of India promise to pay this amount after आपका 91 days. ठीक है, 91 days. So let's say the face value is 100 and they issue it at discount. ठीक है, discount पे issue हुए कितने पे? 91 rupees पे. ठीक है, so that means there is no fixed written in these particular one. हाँ, इस तरीके से ही होगा कि as of now you have to pay 91 rupees and at the time of maturity you will get आपका 100 rupees आपका for per unit value. इस तरीके से जो आपका ये डिजाइन होते हैं. ठीक है, so treasury bills are money market instrument offered for purchase of financing short-term debt obligations of government of India. So these are the three types through competitive or non-competitive bidding process of auction जो आपका कंडक्ट किए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन. So treasury bills are money market instrument financing short-term requirements of government of India. So 91 to 182 and 364 days through competitive and non. These investments in the bill may be made by any person resident in India, including state governments, firms, companies, corporate bodies, institution, trust, and retailers. Non-resident Indians, overseas citizen, and foreign portfolio investor are eligible to invest subject to approval of government and provision of FEMA Act 1999. ठीक है, so who can participate in आपका ट्रेजरी बिल्स और हु कैन परचेज द ट्रेजरी बिल्स, अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन होता है. सो दीज आर द एलिजिबल पार्टीज. ठीक है, इंडियंस में एनआरआई एंड आपका ओवरसीज सिटीजन, ओसीआईज एंड एफपीआईज, दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट, but there are certain
guidelines, they have to adhere those particular guidelines also, right? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी लोग, important है again, ठीक है. So the table of this particular one जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है. So 91 days, 182 days and 364 days, ठीक है. जैसे आपका ये हुआ, यूजुअली दे गेट ऑक्शन ऑन वेंसडे. आपका जो सेटलमेंट होता है दैट जनरली हैपन ऑन थर्सडे, ठीक है. हमेशा आप ये प्रैक्टिस देखेंगे, इट जनरली गेट ऑक्शन ऑन वेंसडे. और 91 डेज का अगर है तो 91 डेज के बाद जो भी आपका थर्सडे आएगा उस दिन वो सेटल होगा, ठीक है. 182 डेज है तो उसके बाद जो भी आपका थर्सडे आएगा वो आपका सेटलमेंट डेट होगा. या आपका 364 डेज है तो उसके बाद जो भी थर्सडे आएगा दैट विल बी द, लेट्स से 364 days कंप्लीटेड ऑन ट्यूसडे, तो अब वेंसडे नहीं होगा सेटलमेंट. सेटलमेंट कब होगा? थर्सडे को, ठीक है. सो बेसिकली इन्वेस्टर दिल गेट मनी बैक ऑन थर्सडे इटसेल्फ, ठीक है. सो सेटलमेंट टेक प्लेस ऑन T+1 basis. If the day of payment fall under holiday, the payment is made on the working day following the holiday, ठीक है. एक चीज यहाँ पे और भी है, ठीक है. तो अगर जैसे आपका थर्सडे लाइक कोई नेशनल हॉलीडे है तो दैट विल पेमेंट विल बी मेड आपका फ्राइडे को, ठीक है. तो इस तरीके से रहेगा. ट्रेजरी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स आर इशूड फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज एंड इन मल्टीपल ऑफ 10,000. तो डिनोमिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, सो डिनोमिनेशन इज 10,000 रुपीज फॉर ट्रेजरी बिल्स. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. कैश मैनेजमेंट बिल्स मैंने आपको पढ़ाए थे. It is if government need funds for less than 91 days. So for that sake we have cash management bills, ठीक है. तो कैश मैनेजमेंट और ट्रेजरी बिल में डिफरेंस क्या है? बोथ आर सेम, ठीक है, उसी तरीके से काम करते हैं. बट इफ गवर्नमेंट रिक्वायर्ड फंड्स फॉर less than that 91 days period, so they'll come up with the cash management bills, ठीक है. So which of the following statement is true about treasury bills in India? Treasury bill are issued for short term borrowings with a maturity up to 5 years. नहीं. Treasury bills are periodic interest during, no, ये discount पे issue होते हैं. Treasury bills are issued at discount and redeemed at face value. अभी मैंने आपको बताया था ना, let's say RBI they come up with this auction, ठीक है. उसने बोला कि like the face value was 100, ठीक है, which is known as par value, ठीक है. And the discounted value is suppose that 92 rupees. That means as like investor they'll pay 90 rupees, 92 rupees, and at the time of the maturity they'll get 100 rupees. So this is the one. यहाँ पे कोई interest rate आपका नहीं होता. Treasury bill only can be issued by commercial bank. No, these are generally issued by the government of India. So C will be right answer. So do not pay interest, but are instead issued at a discount price and redeemed at a full face value, providing and inflict a yield to investors. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जितनी भी होती है, जितने भी मोस्ट ऑफ आपका जीसेक हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ठीक है. तो वो बॉन्ड, इवन बॉन्ड ऑल्सो, ठीक है. सो दे ऑलवेज इशूड ऑन डिस्काउंट एंड दे गेट रिडीम्ड एट योर पार वैल्यू, ठीक है, और जो फेस वैल्यू, ठीक है. सो द सेटलमेंट ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल टुक प्लेस ऑन T+1. अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है. बेसिस इफ द डे ऑफ पेमेंट्स ऑन हॉलीडे, so the payment on the next working day following the holiday, तो ये हमारा करेक्ट हो गया. Treasury bills are issued in a minimum denomination of 10,000 and multiple of the same amount. Instrument is quoted at discounted price to the face value of आपका मोस्टली इट इज 100 रुपीज, ठीक है. तो ये आपका जो अभी हमने स्टेटमेंट्स देखे थे वहां से उसी स्टेटमेंट से कैसे वो क्वेश्चन आपको डिजाइन कर सके. हाँ, पहला ही सही है आपका, ठीक है. सो T+1 10,000 एंड फेस वैल्यू इज यूजुअली आपका 100 रुपीज. सो सेटलमेंट टेक प्लेस ऑन T+1. The day of payment fall on holiday, so the payment is made on a working day following the holiday, ठीक है. जैसे अगर 15th अगस्त को आपका है, so 15 अगस्त is national holiday, so your settlement will be happen on 16th अगस्त, ठीक है. इस तरीके से आपका, ठीक है. 10,000 is the denomination for both the cases, CMS आपका cash management bills, CMBs और आपका treasury bills. Instrument is quoted on discount with a face value or par value of 100 rupees. It quoted in secondary market on yield basis. The instrument is redeemed at par value, which is also known as face value, with the difference between the issue price and value. जैसे 92 was the issue price and the another one was 100 rupees, ठीक है. Alright, चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement about certificate of deposit are not correct, ठीक है. So are not correct, ठीक है.
सो सीडी के संबंध में आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है। सो सीडी आर नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सही है, इशूड बाय ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक आपका गलत है, डीएफआईज आल्सो इशू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल, ठीक है। So this statement is wrong. The minimum denomination of CD is 1 lakh. ठीक है, certificate of deposit now it is 5 lakh. Earlier it was 1 lakh. अभी ये 5 lakh हो गया. And they are issued on a multiple of 5 lakh itself. तो ये भी गलत हो जाएगा, आपका 5 लाख होगा, ठीक है. Buyback of CD, certificate of deposit are prevailing market price can be made only 14 days after. No, it is आपका how many days? 7 days after the date of issue of CD. Non-resident, कोई सही भी है इसमें, non-resident Indians are also permitted to subscribe the CD. हाँ, this is correct. While the tenure of issue of range 7 to 1 years, most CDs are issued for 3 months, 6 months एंड 12 months. हाँ, बिल्कुल सही. तो 2 स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं, ठीक है, और आपका 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो नॉट करेक्ट मींस इनकरेक्ट, मतलब 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. सो दीज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में ये, ठीक है. सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय dematerialization form, issued in a dematerialized form by the scheduled commercial bank including RRBs and small finance bank. Select all India financial institution that have permitted by RBI. CDs are discounted instruments and are issued at discounted price and redeemed at par value, as we have treasury bills. While the tenure of issue of range is 7 to 1 years, usually the companies, banks, they generally issue these particular one in 3 months, 6 months and 12 months. आपका CD can be issued to individual, आपका other than minor corporations, companies, trust and association. Non-residents and NRIs also can be permitted in this particular one. However, they are mainly subscribed to the bank, mutual funds or this. The minimum amount of CD is 5 lakh, certificate of deposit is 5 lakh, and so denomination is 5 lakh and multiple. This is means आपका जैसे as an individual, if you make a bid to purchase that particular one, so your bid will be in 5 lakh or the multiple, ठीक है, 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh. Your bid cannot be 2 lakh or 7 lakh, ठीक है. So that is the meaning of this. Bank are not allowed to grant loan against CD. Please do remember this. ऐसे point बहुत बार पूछे जाते हैं. Buyback of CD at prevailing market can made only 7 days after, not 14 days. जैसे वहां पे आपका mention था, ठीक है. So understood guys. आगे बढ़ते हैं. So certificate of deposits, a money market instrument issued by scheduled commercial bank, including RRBs, small finance bank, and select DFIs. That has been permitted by RBI to raise short-term funds. CDs are discounted instrument and are issued at a discounted price and redeemed at par value. Discounted price means वैसी जैसे हमने अभी बात किया था ना, 100 rupees का face value है, they get issued on discount at 95 rupees. At the time of maturity, investor will get 100 rupees. ठीक है. So 3 months, 6 months और 12 months आपका. चलो आगे बढ़े. Next question guys. Which of the following statement is incorrect about the commercial paper? So commercial paper that generally get issued by the आपका कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसेस विद A3 रेटिंग्स, और मतलब बहुत सारी गाइडलाइंस यहाँ पे भी होती हैं जिनको पढ़ेंगे, ठीक. इट इज अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेट. ट्रू. हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट. ओके. इट कैन बी इशूड बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है. ओके. The maturity period CP range from 7 to 1 year. This is also true. CP require mandatory collateral backing for issuance. No. ठीक है. तो ये देखो, इनमें से सबसे ज्यादा जो गलत स्टेटमेंट है वो ये है. Now this statement B, ठीक है, it is can be, ठीक है, आपका यहाँ जैसे लिखा हुआ है ना, ठीक है, it can be. अब बेसिकली एक्चुअली ये स्टेटमेंट आपका होना चाहिए किसके अराउंड? आपका it should be around the participants, ठीक है. बैंक they can participate in that particular one as a buyer, ठीक है, investor आपका इसमें. तो D for short, D will be the right answer for this one, ठीक है. So they does not require. unsecured है तो आपका that means there is no collateral required, ठीक है. तो एक बार आपका explanation देख लेते हैं. With a view to enabling highly rated corporate borrowers to diversify their source of short-term borrowings and also provide an additional instrument to investors,
RBI introduced commercial paper as a money market instrument in Indian financial market in 1990s. A commercial paper is an unsecured money market instrument issued issued in the form of promissory note. ठीक है, तो जहां पे आपका basically they are corporate houses, they are making promise. ठीक है, I promise to pay you this money at this वो जो चाहता है आपका. Companies including non-banking finance companies, NBFCs and all India financial institutions are eligible to issue CP. ठीक है, अब देखो वहां पे ना शेड्यूल कमर्शियल बैंक लिखा था, दैट्स व्हाई दैट वाज रॉन्ग. दिस इज द करेक्ट वन. ठीक है, वहां पे क्या होना चाहिए था, एनबीएफसीज और all India financial institutions, they are also eligible to issue the commercial paper, but they have to fulfill these particular guidelines. क्या क्या है, अब देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन ठीक है, आपको ये मिल सकता है कि they have to fulfill which of the following requirements आपका, तो इसको ध्यान रखें. Any fund based facility available from bank and financial institution is classified as standard asset by all bank or situation at the time of the issue. ठीक है, institution at the time of the issue. Other entities like cooperative societies, union, government trust, limited liability partnership, or and any other body corporate having presence in India with a net worth of rupees how much, आपका 100 crores or higher. Any other entity specifically permitted by RBI. ठीक है, all resident and non-resident permitted to invest in CP under FEMA guidelines 1999 are eligible to invest CP. However, no person can invest in CP issued by related party either in a primary and secondary market. ठीक है, so जो related party is kind of जो उस कंपनी के ही आपके एसोसिएट्स या जो वेंडर्स हैं, दे कैन नॉट लैंड इन दिस पर्टिकुलर वन. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बार बहुत बार पूछा गया. ठीक है, तो जिसको आपको ध्यान रखना है. एलिजिबल पार्टिसिपेंट और इश्यूअर shall obtain credit ratings for issuance of CP from any SEBI registered credit rating agency. This slide is again very important. So as we mentioned कि जो भी कंपनीज आपका सीपी इशू करेंगे, they should have a good credit rating. Good credit rating means A3 rating standards by the आपका SEBI. ठीक है, अब अगर कोई कंपनी, if a company is raising more than 1000 crores, ठीक है, आपका थ्रू कमर्शियल पेपर, so they'll be requiring multiple ratings. तो जहां पे सबसे लोअर रेटिंग जो होगी, that will be considered in that particular case. ठीक है, तो CRAs आपका the minimum credit rating shall be A3 as per the rating symbol and the definition prescribed by the SEBI. The issue shall ensure that at time of issuance of CP, the rating so given is current and not due for the review. ठीक है, जो रेटिंग है that is current. ठीक है, eligible issuers whose total CP issuance during a calendar year or financial year is rupees 1000 crore or more shall obtain credit rating for issuance of CP from at least two credit rating agencies. ठीक है, तो कोई ऐसी कंपनी, those who have already raised 1000 crore, they want to go beyond that particular one, so they will be required to take credit ratings from at least two. in two में भी जिसका lower होगा, that will be known like that will be considered for the application. ठीक है, registered with SEBI and should adopt the lower of two rating. This point is very important. Where both rating are same, the issuance shall be for the lower of the two accounts for which rating are obtained. CP can be issued for maturities between 7 days and maximum up to 1 year. The maturity date of CP shall not go beyond the date up to which the credit rating of issuer is valid. ठीक है, तो credit rating कितने समय के लिए valid है, that also matter in this particular case आपका. ठीक है, ऑलराइट, चलो तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाउ आर मनी मार्केट डील सेटल आफ्टर एग्जीक्यूशन. तो मनी मार्केट में अगर कोई भी डील होता है, दैट गेट सेटल थ्रू द आरटीजीएस. ठीक है, अब आरटीजीएस मतलब इज अ टूल जहां पे हमारे पास जो डील होती है, आपका एनडीएस सिस्टम हमारे पास है. ठीक है, सो एनडीएस सिस्टम आपका विच जनरली वी यूज बायर सेलर को मैच करने के लिए. उसके बाद जो आपके सेटलमेंट्स होते हैं, दे फंड्स जनरली गेट ट्रांसफर थ्रू द आरटीजी आपका आरटीजीएस ओनली. ठीक है, विल डिस्कस एनडीएस इन डिटेल. द ट्रेड आर कंडक्टेड ऑन एनडीएस कॉल सिस्टम.
which is an electronic screen-based system set up by RBI for negotiating money market deals between entities permitted to operate in the money market. The settlement money market deals is by the electronic fund transfer using RTGS system operated by RBI. The repayment of borrowed funds also take place through the RTGS system on the due date. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे लाइक वेल बोरोवर्स दे विल टेक मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर और दे विल बैक लाइक गिव बैक दैट मनी टू द इन्वेस्टर्स, तो दोनों में मेच्योरिटी में भी और आपका एट द टाइम ऑफ बोरोविंग. सो वी विल यूज द आरटीजीएस सिस्टम. एनडीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम इसको हम बोलते हैं. इट was developed by RBI in 2017 or somewhere. ठीक है, so 2000, just a minute. हाँ, ठीक है. So the trades are conducted on NDS call system, which is an electronic screen-based setup by RBI team for negotiated money market deals between entities permitted to operate in the money market. The settlement happen on RTGS ground or the state. The NDS is आपका basically this is a kind of electronic platforms जिसके थ्रू आपका companies they can raise funds or investors they can have their bid or they can invest the money, right? Which entity operate the NDS? NDS is again important one, team. So that's why I have keep the multiple question based on this, team. So it was get introduced by the RBI itself, team. So RBI आपका negotiated dealing system, electronic system, which generally help to trade in government securities and all. What is the tenure of funds provided under TLTRO scheme? ठीक है, so TLTRO, that is known as targeted long term repo operations. ठीक है, so it was get introduced by RBI monetary policy or monetary committee during the situation of COVID-19. ठीक है, तो जब COVID-19 आपका हुआ था, to increase or to infuse the liquidity in our system, so RBI come up with this particular one. So you have to break down this particular statement. Okay? So target was to create liquidity or to combat the impact of COVID-19. Long-term repo. So it is repo transaction which is long-term. Usually repo transaction are happen for 90 days. But this is long-term repo. So long-term repo means the transaction range is up to 3 years. ठीक है, 3 साल तक के लिए आपका यहाँ पे RBI auction money through this particular one. ठीक है, so this is the one. ठीक है, so basically what RBI is trying to do with this particular one? RBI is providing or lending money to banks at repo rate. ठीक है, तो repo rate पे banks को पैसा मिल रहा है for long term period for 90 days. This is normally for 90 days, but in this situation they are getting money for 3 years. So that means if banks will get more money from RBI at lower cost, it will come down to their MCLR. उनका जो MCLR का लेवल है वो नीचे आएगा. That means they'll have more money in their hand, so they'll lend customers at a lower rate. So to infuse liquidity in the system, RBI come up with this particular tool, and इसके जो tenures आपके थे that was for 3 years. ठीक है, so targeted long term repo operation implementation, the RBI conducted auctions of targeted repo operation up to 3 years of the appropriate size of a total amount of 1 lakh crores at the floating rate linked to the policy rate. Okay? So आपका policy rate means your repo rate. 4 tranche of TLTRO were auctioned by the RBI, each with auction of 25,000 crores. On 17th April, the RBI conducted TLTRO 2.0 आपका which was आपका 50,000 crores. ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, we have one slide for this one also. Yes, so ध्यान रखेंगे. So TLTRO was introduced in the month of February 20. ठीक है, so जब कोविड आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है, this was the time, मार्च से लॉकडाउन लगे थे, तो this was the time जब मार्केट में पूरा कोविड का इम्पैक्ट आ चुका था वर्ल्ड वाइड, एंड we are having that sense as a RBI. So they come up with a new tool that is called as TLTRO or LTRO. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना TLTRO और LTRO में. ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो आपका ऑपरेशन. It to encourage bank to undertake maturity transformation smoothly and seamlessly. So as to augment a credit flow,
to productive sectors to ensure bank about the availability of durable liquidity at reasonable cost relative to prevailing market conditions. Accordingly, it was decided that from the fortnight beginning February 15, 2020, the RBI would conduct policy, term repo 1 year, 3 years of appropriate size for up to total amount of 1 lakh crores at policy rate. The first TLTRO were conducted on 17 February to 24th February 20 for 25,000 crores each for tenure of 3 years and 1 year respectively. So following operation guidelines shall be other to TLTRO conduct under this scheme are in addition to existing LAF and आपका MSF operations. ठीक है, तो लिक्विडिटी आपका एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के एडिशनल ये आपका काम करेगा. The total amount of liquidity injected through these operation would be 1 lakh crores का ओवरऑल लिक्विडिटी इंक्रीज किया गया आरबीआई के द्वारा. TLTRO is conducted on e-Kuber. e-Kuber is a platform जहां पे आरबीआई व्हाट आरबीआई डू इसके थ्रू आपका ऑक्शनिंग होता है. जैसे टर्म रेपो है या ऐसे जो भी सारे होते हैं, इनका एक ऑक्शनिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है. अगेन जैसे एनडीएस सिस्टम है वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है आपका e-Kuber. ठीक है, सो बैंक वाइज बिडिंग यहाँ पे आपकी होती है. सो दैट इज द पार्ट ऑफ दिस and the operations are conducted at a fixed rate. Bank are required to place their request for the amount served under the TLTRO, the window timing at the prevailing policy rate. In case oversubscription of the notified amount, allotment is done on pro rata basis. ठीक है, तो pro rata is like आपका price time priority. जैसे our rate is आपका जो भी उस समय का आपका रेपो रेट था प्लस उसके ऊपर जितना बिडिंग है. ठीक है, लेट्स से आरबीआई इज कमिंग विद 25,000 करोड़ और ऐसे जो बिडिंग आपके आए थे. ठीक है, सो इफ बैंक आर आस्किंग फॉर मोर मनी, ठीक है, बहुत सारे बैंकों ने सभी बैंकों ने पार्टिसिपेट किया. सो नाउ लेट्स से वी आर हैविंग 25,000 करोड़ एंड वी गॉट बिड ऑफ 2,50,000 करोड़. सो हम क्या करेंगे, जिसने सबसे ऊपर का बिड किया है उसको अलॉट करेंगे. अगर उसमें भी ज्यादा होता है देन वी विल एलिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ आपका टाइम प्रायोरिटी. सो प्राइस एंड टाइम प्रायोरिटी जो चलेगा. द बिड अमाउंट शुड बी फॉर अ मिनिमम 1 करोड़ एंड मल्टीपल. ठीक है, तो इसका जो डिनोमिनेशन है दैट इज 1 करोड़ एंड मल्टीपल्स. ठीक है, जैसे टर्म रेपो में आपका होता है. सो दिस इज द वन, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ध्यान रखिएगा. सो वाई TLTRO, जैसे ये मैंने आपको डिस्कस किया. ठीक है, कोविड वाज द मेजर रीजन where the bank must invest the funds. ठीक है, so आपका TLTRO RBI securities from primary and secondary market and this go to the customer debt and all. ठीक है, extent of TLTRO and others. ठीक है, so please have a look before going to your examination hall. So this will help you out in your upcoming examination. ठीक है, next one guys. ABC Corporation, a leading manufacturing firm, is planning to issue commercial paper to meet short-term funds and all. In the context of commercial paper, which of the following statement is true? So you have to find out the correct statement about the आपका commercial paper. So eligible issuers whose total commercial paper issuing during the calendar is rupee 1,000 crores or more shall obtain credit rating issuance of CP from at least 2 credit rating agencies registered with SEBI. बिल्कुल सही है यहाँ तक ये स्टेटमेंट है, बट आगे जितना मुझे दिख रहा है थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है. ठीक है, गड़बड़ क्या है, शुड अडॉप्ट द हायर ऑफ द टू. नहीं, क्या होना चाहिए था आपका यहाँ पे, लोअर ऑफ द टू होना चाहिए था. ठीक है, सी गाइस दिस इज द थिंग, मतलब इस लेवल का आपको एक्सपर्टीज डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है, तो जहां पे इफ यू हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंट ना, अगर आप इसको पढ़ के इसको ढूंढ लिए ना, बिलीव मी गाइस यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. ठीक है, और अगर थोड़ा सा नहीं आपको यहाँ पर पढ़ के जज कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा. तो वो 90% जो हमारा लेंथ था वो सब कुछ सही जा रहा था, बट एक वर्ड ने हमारा सब कुछ मामला गड़बड़ कर. दिस इज रॉन्ग. रॉन्ग क्यों, वी विल पिक द लोअर वन. ठीक है, नो, तो पहला स्टेटमेंट है गलत. नो पर्सन कैन इन्वेस्ट इन सीपी इश्यूड बाय related party either in primary or secondary market. This is 100% true. ठीक है, ये आपका करेक्ट है. तो हमें क्या ढूंढना था, करेक्ट स्टेटमेंट. तो only 2 will be right answer for this particular beautiful question guys. ठीक है,
तो ऐसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिए, वहां पे पहले कहानी मिलेगी, फिर क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ पहुंचते पहुंचते आपका पेशेंस लूज होगा, एक छोटा सा वर्ड आपको धोखा दे जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अभी तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया भी था ये, वी हैव गॉन थ्रू दीज पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स इन डिटेल, ठीक है। तो क्या था आपका, जब मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितना होना चाहिए, A3 होना चाहिए। अगर 1000 करोड़ और उससे ज्यादा का अमाउंट आप बोरो करें से, तो आपको दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रेटिंग्स लेना पड़ेगा। इन दोनों में से जिसने लोअर साइड पे दिया उसको आपको मानते हुए आप कहीं ना कहीं यू हैव टू रेज दैट पर्टिकुलर फंड, अडॉप्ट द लोअर ऑफ देम, ओके, सो दैट इज द वन। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। The tri-party repo system introduced by RBI. Tri-party repo was get introduced in August 2017. What is tri-party repo? ठीक है, देखो क्या होता है ना, repo. You know the repo, RBI to bank. ठीक है, so there are only two parties. ठीक है, in case of repo transaction, we have only two parties. ठीक है, तो repo में क्या होते हैं, दो parties होती हैं, ठीक है, पार्टी A and पार्टी B. अब इन केस ऑफ दिस इज योर रेपो, ठीक है, बेसिक आपका, ठीक है। In case of tri-party repo, we have tri means third. One another party is also there who is providing the guarantee or arranging the funds on behalf of the another party. ठीक है, जैसे this is borrower and this is आपका lender, ठीक है। अब ये जो है मतलब this particular one is generally working as a mediator. So mediators आपका intermediary की तरह काम कर रहा है इन दोनों के बीच में. A is approaching to this providing guarantee to B कि आप इसको पैसा दे दो. So this is generally known as your tri-party repo agreement and it was get introduced in 2017. ठीक है. So a tri-party repo is a type of repo contract where a third party apart from the borrowers and lender called tri-party agent act as intermediary between two parties to repo to facilitate the service like collateral selection, payment and settlement, custody and management during the life of the transaction. So it was get introduced by RBI in August 2017. All right. So a tri-party is generally हमने इसको आपका बात किया. The TPA act as intermediary between borrowers and lender performing services जैसे आपका collateral selection, payment and settlement, custody and management of collateral services. ठीक है. So a tri-party repo is a type of repo transaction. This तो जो हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं. Eligibility criteria. This is important here. Again, very important. Eligibility criteria of tri-party agent. Okay. So all tri-party agent need to prior authorization from RBI to act as a, in this capacity. Scheduled commercial bank, stock exchanges and clearing corporation of stock exchanges or clearing corporation authorized under the Payment and Settlement System Act 2007 are eligible to become tri-party agent. The applicant should have a minimum paid up equity capital of 25 crores. The applicant should have past experiences of 5 years in the financial sector in India or abroad. Tri-party agents should put in place educate system, infrastructure and more. Okay? So these are the major guidelines to become a tri-party agent. ठीक है, तो इसमें मेजरली कौन है आपका, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, आपका ऑथराइज अंडर पे जो दोज हु आर ऑथराइज अंडर दिस PSS एक्ट 2007 इटसेल्फ. ठीक है, इसके अलावा 25 करोड़ रुपीस का मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है. 5 साल का आपका एक्सपीरियंस, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. I'll give the star to this particular one. ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में आपको याद रहेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following statement regarding bill rediscounting scheme BRDS are correct? ठीक है, so again it is a platform. ठीक है, ये भी क्या है आपका एक प्लेटफॉर्म है. ठीक है, so what is BRDS प्लेटफॉर्म? ठीक है, जहां पे let's say you are an exporter, आपने कोई एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, and you got like your export receivables are scheduled after 90 days. ठीक है, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग इज डन. नाउ यू हैव LC, your export is backed by LC and you have one bill of exchange where that bill of exchange is making some sort of आपका कुछ भी नोट आपका that is making a promise कि you will receive that money after 90 days. But for your working capital requirements you need money. So in that case this is the platform which is generally going to help you. So what you will do, you will upload your bill on this particular platform. Bank or other financial institution as a financier,
they'll generally go through your bill and they'll offer you कि हाँ we can discount this particular bill at 1%, 2%, 5%, जो भी आपका जैसा इंटरेस्ट है, ठीक है. So the bill of exchange should arise from a bona fide trade transaction. हमें क्वेश्चन क्या है, which of the following statement regarding the so पहला correct है, the unexpired tenure of bill of should not more than 120 days. No, it should be 90 days, ठीक है, 90 दिन होना चाहिए. The BRDS transaction is carried out on discounted basis. बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि 90 दिन पहले पेमेंट दिया था, obviously they'll ask for some discount, ठीक है. Interest is calculated on actual basis. 100% true. This I have taught you in AFM subject, आपका bonds के अंदर, ठीक है. तो interest calculation क्या होता है? So it is generally known as, this concept is generally known as day count convention, ठीक है. तो जहाँ पे like we have 30, 360, we have actual, we have 30, 365, we have actual 365. तो this is जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है. वेरी माइनर पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखें. इट इज कॉल्ड डे काउंट कन्वेंशन, ठीक है. मतलब जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा, तो व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर आपका एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, एक्चुअल, और आपका इन अ ईयर वी विल कंसीडर 365 डेज इवन इफ इट इज अ लीप ईयर. ओके, इस तरीके से इसका मतलब है. अगर ये होता 30, 360, that means in a month we will consider 30 days and here we will consider आपका 360 days in a year. तो वो day count convention, but usually we use this particular one in most of the cases, 99% cases, ठीक है. The lender received the principal amount from the borrowers on maturity. The lender received the principal amount from borrowers this is like basically the lender receive the principal amount, no, borrowers like they'll get money from the जो भी आपका बिल है उससे ना, ठीक. तो वन आपका करेक्ट है, वन करेक्ट है, थ्री करेक्ट है, फोर करेक्ट है, ठीक है. तो 1, 3, हाँ. सो ऑप्शन ए शुड बी राइट आंसर, और आपका डी भी हो सकता है, एक बार देख लेते हैं. चलो, हाँ, डी है एक्चुअली, ठीक है. चलो, तो ये देखो छोटा सा स्टेटमेंट आपका था विच आई मिस. तो आपका क्या है करेक्ट आंसर आपका, what is your correct answer? This is also correct answer actually, ठीक है. I missed this, I was little bit doubtful about this. So correct, the lender receive the principal borrowers from the, अच्छा ओके, इट इज फ्रॉम प्रिंसिपल बोरोवर्स. ये यूज किया गया था क्या, उसमें नहीं किया गया था. अच्छा, गड़बड़ थोड़ा सा ना, ये छोटे छोटे टर्म्स आपका जो मिसिंग है, दैट इज द रीजन वेयर वी वेंट रॉन्ग, ठीक है. बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आपका, ठीक है, जिसको ध्यान रखें, ठीक है. और ये भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसकी वजह से हमारा आंसर गलत हुआ, ठीक है. So bill rediscounting scheme is a system that allow financial institution to rediscount unmatured bill with other financial institution. RBI introduced bill BRS to encourage disciplined credit use and to provide liquidity to the banking system. Eligible commercial bank can rediscount trade bills, basically import export bill, up to 90 days tenure accepted by the licensed bank with RBI. The minimum amount of bailment under this facility is rupees 1 lakh and multiple, ठीक है. तो जो डिस्काउंटिंग हो गई दैट विल बी 1 lakh and multiple. 50,000 का बिल डिस्काउंट पोर्टल आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है. So that is the one. So BRDS is a rediscounting trade bills which have already been purchased by or discounted by with a bank by the customers. These trade bills arise out of supply of goods and services. Bank in their normal course of business discount genuine bill of exchange. This form part of the loan and advances or credit portfolio of the bank. ठीक है, ये जो discounting होगा that will come under the आपका लैंडिंग पार्ट ऑफ द बैंक, ठीक है. तो ये इसीलिए वहां पे जो ओरिजिनल आपका बोरोवर से उसको कहीं ना कहीं उससे पैसा आ रहा था, जो स्टेटमेंट था, ठीक है. टू प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड to promote the bill culture in the economy, RBI formulated a scheme so where bank may raise funds by issue of a derivative Ussain's promissory note. Derivative Ussain's promissory note. Ussain's is like basically ठीक है, होता है क्या, where payment will be done after a certain days, ठीक है. We have two type of bill. वन इज आपका यार नोट दो तरीके के हो सकते हैं, होता है डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड, जैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा उसी समय पेमेंट आपका. दूसरा उस सेंस इज लाइक वी हैव अ सर्टेन डेट, ठीक है. सो इनकन्वीनियंट
lots and maturities on the strength of genuine trade bill discounted by it. The scheme is known as BRDS. That is Bill Rediscounting Scheme. All right. Next one. The bill of exchange should have arisen on account of bona fide trade transaction. House bill and bill of finance companies are not eligible to cover BRDS. The bill of exchange should be unencumbered. Unencumbered means उसके अगेंस्ट में कहीं पे आपका और लोन नहीं लिया गया हो, ठीक है, दैट इज फ्री, ठीक है, मतलब उसके ऐसा नहीं कि आपने उसके अगेंस्ट में कहीं से और भी लोन लिया है फिर आप यहाँ पे भी डाल रहे हो, नो, ठीक है. इनकम्बर्ड, अनइनकम्बर्ड. अनइनकम्बर्ड मीन्स दैट इज मतलब वी आर नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर वन फॉर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल गारंटी, ठीक है. The unexpired tenure of bill should not more than 90 days. Very important statement, guys. The advance of a bank borrowing under BRDS get reduced to extent of the borrowing while it is known as advance on the lender's book. ठीक है, इसलिए आपका यहाँ से आ रहा था, ठीक है. BRDS transaction is carried out on a discounted basis and has a following feature like interest is calculated on actual 365 days day count convention. Interest is calculated on front end basis and rounded off to the nearest rupee, ठीक है, मतलब जो अगर लेट्स से आपका 10,50,000 मतलब ऐसा होता है ना 50 पैसे से ऊपर एंड ऑल वाला जो केस है, ठीक है. द लैंडर रिसीव द प्रिंसिपल अमाउंट फ्रॉम द बोरोवर्स ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन. द इफेक्टिव यील्ड ऑन द बिल डिस्काउंटिंग इज हायर देन द डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है. सो आई होप समझ में आ रहा होगा. और एक और चीज आपको समझ में आ रही होंगी कि whenever I prepare content, so I always keep this particular thing in my mind कि we do not have to miss the आपका मैकमिलन बुक, ठीक है. तो दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन आपको वहां से मिलने हैं तो क्यों ना हम उसी के अलाइनमेंट में स्टडी करें, ठीक है. तो मतलब ये हर सब्जेक्ट के साथ मैंने किया है, वो एएफएम हो, ये हो, आरबीडब्ल्यूएम है या पीपीबी में भी सेम सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है. कि तो क्या है ना, कंटेंट वहां से. अब अगर आप खुद अगर आपके पास इतना टाइम होता कि आप खुद से वो बुक पढ़ लेते तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा होता, ठीक है. तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू नीड अ समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, फॉर दैट सेक आई एम वर्किंग दिस मच हार्ड, ओके. तो ध्यान रखें और थोड़ा अपने दोस्तों को भी बता दिया करें कि इस तरीके से पढ़ो, मतलब लाइक देयर आर सम हैक ऑफ दिस एग्जामिनेशन, उनको ढूंढो, पास करो, सीआईबी में जाओ बढ़िया से, ठीक है. और फिर वहां से पास करना, पैसा बढ़ाना अपना, ठीक है. और आगे और चीजें भी होंगी आफ्टर सीआईबी, ऐसा नहीं कि सीआईबी पे खत्म हो जाएंगे. विल गो फॉर सीएफपी, विल गो फॉर मल्टीपल सर्टिफिकेशंस, ठीक है. सो बिल रीडिस्काउंटिंग बीआरएस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई फॉर व्हाट पर्पस, ठीक है. अब ये समझ में आ गया. टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम, टू एनेबल लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, टू रिप्लेस कमर्शियल पेपर, टू अलाउ इन रिटेल इन्वेस्टर टू दिस, ठीक है. तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है. वी जस्ट टॉक अबाउट दिस एंड दिस इज इट. तो पहला सॉरी 30th यूनिट आपका, ठीक है. सेकंड, एज आई सेड यस्टरडे आल्सो, आई जस्ट वांट टू चेक, हाँ आई नो कि बिकॉज every session of I and IFS it will go around on an average 50 minutes. If it is RBWM or PPB or AFM, we can summarize that particular one or practice hardly आपका 30 to 40 minutes. But for this subject specifically, because where we have lots of keywords and all, ठीक है. So अगर हम एलिमिनेशन पर भी आते हैं ना, बहुत कम चांस मिलते हैं, देखो. तो उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना. यू डू नॉट हैव टू लूज योर पेशेंस. ओनली थिंग दैट आई एम आस्किंग फ्रॉम योर साइड, दैट इज योर कंसिस्टेंसी और योर पेशेंस, ठीक है. ऐसा नहीं कि यार एक दिन पढ़ा 1 घंटे का लेक्चर बस अगले दिन खत्म, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है. तो दोस्तों तो बिल्कुल पढ़िए. कैसा लगा सेशन जरूर बताएगा, कैसा लगा क्वेश्चन. इफ यू वांट सम सॉर्ट ऑफ improvisation in these particular questions, we'll definitely do. But I have appeared in this particular examination last year on itself. I have scored 71, 72 in this particular paper, ठीक है. तो तब तो मेरा इंटेंशन भी नहीं था इसको पढ़ाने का. बट सी व्हाट आई फील ना, उसके बाद लास्ट टाइम भी आई विजिटेड द सेंटर एंड ऑल. तो जब मेरा वहाँ पे बात होता है, अगर आप में से कोई बेंगलुरु में होगा तो दिस ईयर ऑल्सो वी विल कनेक्ट एंड आई विल कम टू योर सेंटर. आई जस्ट वांट टू नो कि हाँ क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से IIBF आपका नई चीज़ों को उसमें डाल रहा होता है, ठीक है. सो दैट हेल्प अस टू बिल्ड द कंटेंट, ठीक है. तो वो कंटेंट अगर सही डायरेक्शन में बन रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो इशू. आप दीज आर द एरियाज, ठीक है. नाउ आफ्टर सम टाइम जैसे एग्जाम मंथ आएगा, देयर विल बी सम बैंकर्स फ्रेंड्स, ठीक है. दे कि सर आप पास करा दो कैसे भी, साथ देना हमारे पास. फॉर देम ऑल्सो विल हैव समथिंग कि लाइक इस तरीके से जाना है. बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट वे, ठीक है.
मैं आपको हमेशा कॉन्सेप्ट ड्रिवन लेके जाना चाहूंगा, बिकॉज these are the concepts which are going to help you in your upcoming exam like आपका CAIB CFP and others। तो जहां पे हम जाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा इनका हेल्प लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। कैसा लगा जरूर लिख के बताइएगा, थोड़ा सा लिख के बताया करें, ठीक है, दैट actually motivate us, and do share your feedbacks, and if you like the session, please do like and do share with your friends so they can also take advantages of these particular classes. All right, so this is it from my side. Thank you for joining this session, thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day, and I'll see you tomorrow at 7 p.m. with our unit number 31, which will which is all about your capital market. Again, very healthy discussion, very nice discussion will be there in that particular one also. All right, so bye bye, take care all, have a nice day, thank you.